Jai Hind, today we have invited Advocate Harsh Vardhan. He is an practicing advocate with the Armed Forces Tribunal. इनको लगभग एक दशक का अनुभव है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में डिसेबिलिटी के केसेस के अंदर इन्होंने काफी काम किया है. अदरवाइज ही डिड इज एलएलबी फ्रॉम द प्रेस्टिजियस सिम्बियोसिस लॉ कॉलेज. तो आज हमने इनको बुलाया है एक चर्चा के लिए जिसमें मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, particularly focused on disability pension. So thanks for your time, Advocate Vardhan. It's my pleasure to be here, sir. So शुरुआत ही करते हैं आपसे. सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा मैं कि although being an advocate आप इस मेरे सवाल को skip भी कर सकते हैं. I understand that you have your professional limitations. But क्या सेकेंड अपील का आउटकम फेवरेबल होता है या वो भी एक है कि बस मुझे करना है और फिर एएफटी जाना है, या मैं डायरेक्ट ही एएफटी चला जाऊं और मुझे अल्टीमेटली माननीय एएफटी से ही न्याय मिलना है तो फिर वहीं क्यों ना जाया जाए? क्यों मैं 4 महीना और सरकारी विभाग में सेकेंड अपील लिखूं, वेट करूं, वो अपनी सुविधा से जवाब देंगे देंगे नहीं देंगे. दोज आर नॉट द थिंग्स विच आर आई हैव एनी कंट्रोल ऑन. सो from a practical standpoint, what you told me is yes, the technical, the rule position, but from a practical standpoint, and as you said that certain AFT benches do condone the portion of not having made the second appeal. So it seems more practical and expedient to approach the AFT without the second appeal. Though I understand as an advocate, if you may not feel comfortable suggesting that particular path. Sir, first of all, I believe it is the individual's choice. I, as an advocate, can only present the options to a potential litigant or an affected individual. I can tell them the pros and cons of going in for a second appeal or not going in for a second appeal and directly approaching the AFT. दोनों ही अप्रोच के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं. So ultimately, the choice has to be made by the individual because it's a judgment call. So that judgment call must be made by the individual. I cannot make that choice, nor can anyone else make that choice for that individual. मैं इसमें यही एडवाइस करता हूँ अपने जो लोग मुझसे बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, that if your first appeal has been rejected, there's a very, very high likelihood that your second appeal will also be rejected. However, theoretically, it is being looked at by a different set of people. So theoretically, there's a possibility of a favorable outcome, yes. But in my experience, where the first appeal has been rejected, the second appeal is also going to be rejected in all likelihood or in all probability. So therefore, going in for a second appeal is an exercise in nullity. It's an exercise in futility. So generally, I recommend that people go to AFT directly if they are in a position to approach the Honorable AFT New Delhi, if their circumstances make out the jurisdiction, the territorial jurisdiction to be that of AFT Principal Bench. For all officers, in fact, the disability pension case can be filed in AFT Principal Bench New Delhi. However, for non-officers, that may not always be possible. So therefore, उनको देखना पड़ेगा कि उनके circumstances क्या हैं. अगर वो दिल्ली या ऐसी किसी बेंच में अप्रोच कर पा रहे हैं जहाँ पे सेकेंड अपील की रिक्वायरमेंट के लिए इंसिस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ कि वो डायरेक्टली एएफटी जाएं आफ्टर फर्स्ट अपील. बट अगर उनका केस ऐसे जुरिसडिक्शन में फॉल कर रहा है जहाँ पे सेकेंड अपील के लिए इंसिस्ट किया जाता है, देन दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू एग्जॉस्ट द सेकेंड अपील बिफोर गोइंग टू एएफटी. सो जो मैं आपकी बात को एक तरह से समराइज करता हूँ, जो मुझे समझ आया वो ये है कि एकदम बाय द रूल चलेंगे तो फर्स्ट और सेकंड अपील दोनों होनी चाहिए. लेकिन अगर मेरे पास में मेरा जुरिसडिक्शन इस तरह से है, जो ऑफिसर्स के केस में सबके लिए लागू है और नॉन ऑफिसर डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर रिजाइडिंग और वेयर दे रिकॉर्ड ऑफिसेस, अगर कॉज ऑफ एक्शन ऐसे एएफटीज में बनता है जहां सेकंड अपील को बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया जा सकता है, Yes. from practical standpoint, I can save good 5-6 months in terms of getting relief. Yes, and disability pension. Okay. Absolutely, sir. अपील्स के बारे में बहुत बात होगी वकील साहब. अब थोड़ा ये बताइए कि ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करने के क्या क्या स्टेप्स हैं डिसेबिलिटी केस में इन द ऑनरेबल आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल.
सर जैसा कि आपने कहा ओए इज ओरिजिनल एप्लीकेशन, फॉर द व्यूअर्स मैं बताना चाहूंगा कि जो पिटिशन या याचिका हम दायर करते हैं एएफटी में, इट इज कॉल्ड एन ओरिजिनल एप्लीकेशन। इसको फाइल करने के लिए जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, दैट इज नंबर वन, you must generally engage the services of an advocate. If you are capable of handling it yourself, that's wonderful. You may choose to do so on your own. However, I've seen that most people are not, since they're not legally qualified or they're not legally sound, so they would require the services of an advocate. इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोशिश करें कि ऐसे एडवोकेट को एंगेज करें जो एएफटी के प्रोसीजर से वाकिफ हो और खास तौर पे डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस को उन्होंने पास में हैंडल कर रखा हो और उनको उसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी हो। Number two would be that after you engage an advocate, that advocate will draft the OA for you, carry out whatever the procedural formalities are, and thereafter file it with the concerned AFT bench. Once the case is filed, thereafter the case will be listed for hearing before the honorable court or the honorable bench. And on day one, the case will be heard by the bench on the point of admission. That is why the first hearing is also called the admission hearing. उस दिन पे अगर जजेस प्राइमा फेसाई satisfied हैं आपके केस की फैक्ट्स की वैलिडिटी से और that prima facie case is being made out, they will issue notice to the other side, that is the respondents. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया है, वो इसमें रिस्पोंडेंट होती है और जो कंसर्न्ड या अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है जिसने केस फाइल किया होता है उसे एप्लीकेंट कहा जाता है. So this is the terminology used. The one who files the case is the applicant, and the one who defends the case, that is the Union of India, is the respondent. So first hearing में जैसा कि मैंने कहा सर, नोटिस इशू किया जाता है रिस्पोंडेंट को एंड उन्हें टाइम दिया जाता है 4 से 6 मे बी 8 हफ्ते का टाइम दिया जाता है टू फाइल देयर रिप्लाई, और रिप्लाई जिसे टेक्निकली कॉल्ड एज काउंटर एफिडेविट. So after that, on the second or third hearing, whenever they file the counter affidavit, actually this is the stage where it takes the maximum amount of time, because the respondents, that is Union of India, वो जनरली ऐसा देखा गया है कि रिपीटेड adjournments सीक करते हैं कोर्ट से, एडिशनल टाइम मांगते हैं बार बार टू फाइल देयर रिप्लाई, और उसमें जब भी उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है तो 4 से 6 हफ्ते बाद की डेट या 2 महीने बाद की डेट लगती है. तो अगर वो 2-3 बार भी ऐसे एक्स्ट्रा टाइम मांग लेते हैं तो 6 से 8 महीने, मे बी 10 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं उनके एक्स्ट्रा टाइम मांगने के चक्कर में. तो दिस इन द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द केस, दिस इज द टाइम और दिस इज द स्टेज वेयर इट विल टेक द मैक्सिमम टाइम. इसके बाद सर, वंस द रिप्लाई हैज बीन फाइल्ड, व्हेनेवर दे फाइल इट, जो एप्लीकेंट है यानी जिसने केस फाइल किया है उसके ऊपर उसकी चॉइस होती है कि वो उस रिप्लाई का रीजॉइंडर फाइल करेंगे या नहीं. Sir, in simple words, rejoinder is basically a counter reply to the reply which has been filed by the respondents. अगर उसमें कुछ ऐसे facts निकल के आते हैं which warrant an explanation or a further clarification needs to be given to explain whatever objections have been taken in the counter affidavit, in such a scenario we would normally file a rejoinder. In some cases we may choose not to file a rejoinder also. So if we choose not to file a rejoinder, and if we choose to file a rejoinder, so once the rejoinder is filed, it is called that the pleadings are complete for that case. And once the pleadings are complete, the matter is said to be ripe for hearing, final hearing, I mean. So once the pleadings are complete, the case will be fixed for final hearing. And a date, whenever that date is fixed, on that date, both sides will present their arguments in support of their respective case. This is also called as final arguments. So once the final arguments are concluded from both sides, the honorable court may either seek some clarifications, or if they don't seek some clarifications, they will reserve the orders or reserve the judgment. Alternatively, the court may also pronounce a judgment on the very same date. On the date, I mean, on which the final arguments have been concluded. So मैं आपकी बात, आपका इशारा भी समझ गया कि अब आप जाना चाहते हैं. तो मैं इस बात को कंक्लूड कर देता हूँ कि अगर मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर ऐसा लगता है कि उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उन्हें कहीं पर उनका राइटफुल ड्यू एज अ डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रहा है,
तो पहली अपील से लेकर के और जजमेंट आने के बाद अगर वो जजमेंट भी कायदे से कोई डिफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो उसका भी रास्ता है। इस पूरी प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 साल का समय लग सकता है। आप जितना जल्दी हो इस प्रक्रिया को शुरू करें और अपना वाजिब हक लें। जो हमें इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो एडवोकेट वर्धन ने दी, जिसके लिए हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एडवोकेट वर्धन।